So hello kids, today we will do data types for data handling in Python, right? So data type means data types specifies which type of a value a variable can store, right? There are various type of data types we have such as character, integer, string. These are different values, right? And what type of value a variable will store will be the data type of that variable. So different types of data types in Python are numbers, integers, list, tuple and dictionary, right? So we will do one by one. So first data type is number, which is also called as numeric data type. So, number or numeric data type is used to store numeric values. Python has three numeric data types or types. These are integer, floating point numbers and complex numbers. So all numbers without decimal places comes under integers. सारे नंबर्स जो डेसिमल प्लेस वाले नहीं होते हैं या विदाउट डेसिमल प्लेस वाले होते हैं वो सारे हमारे इंटीजर नंबर्स होते हैं, राइट. सेकेंड वन इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, द नंबर्स विद डेसिमल प्लेसेस, राइट. आप देख सकते हैं दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ floating point numbers, means number having decimal values. Third one is complex number, which is in the form of x plus yj, where x is a real part and y is imaginary part, right. So this is one of the example of complex number. So numeric or number data types are integer numbers, floating point numbers and complex numbers. If we have 100 plus 0.78 or 101 plus 23j, all these comes under numeric or number data types. Next is string data type. A string is a sequence of characters. In Python we can create string using single quote और डबल quote. कोई भी नाम है या करेक्टर का सीक्वेंस है वो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर आता है. फॉर एग्जांपल STI इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस. सो कंप्यूटर साइंस इज अ वैल्यू विच बिलोंग्स टू स्ट्रिंग डेटा टाइप. यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस वैल्यू है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप से बिलोंग करती है. नाउ बूलियन डेटा टाइप, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो ट्रू या फॉल्स होती हैं, राइट. सो अगर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ आ रही हैं तो ये दोनों बूलियन डेटा टाइप को बिलोंग करेंगी. नेक्स्ट डेटा टाइप इज लिस्ट. लिस्ट आर एक्चुअली कलेक्शन ऑफ आइटम्स. अ लिस्ट इज अ म्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स. Two terms, mutable and immutable, we will cover later on, right. So list is a collection of item. For example, list is equal to, within square bracket we can write 6, 9, or we can increase size 3, 6, 8, 9. So all these values are actually collection of values and represented with this list variable. As str variable is storing computer science, this list variable is storing these all values, right. So if we want to store a list of values we have to use list data type, right. Or we can change even lst, no need to write list, or l1, right. तो इस तरह से अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं या लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं
तो उसके लिए हमारा जो डेटा टाइप यूज़ होगा वो लिस्ट होगा. सो लिस्ट इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ items, right? Next data type is tuple. Tuple looks like list but this is immutable, right? ये immutable है, पाइथन ऑब्जेक्ट है, जबकि जो लिस्ट था वो म्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट है. एक्चुअली म्यूटेबल में हम चेंजेस कर सकते हैं, परंतु इम्यूटेबल में हम चेंजेस नहीं कर सकते. वी विल कवर दिस म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल later on, right? So what is the difference between list and tuple? In list we have square bracket and in tuple we have round braces, right? And the second difference is list is mutable and tuple is immutable, right? So tuple is also a collection of items, but this is immutable and it use round braces to create a list or collection of items. And last data type is dictionary, right? Dictionary is an unordered collection of items and each item consists of a key and value. So dictionary में जो values या डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर होता है. तो वी कैन हैव एग्जाम्पल ऑफ डिक्शनरी. So dict is equal to, here we will use what, curly braces, right? In list we use square bracket, in tuple we use round braces, and in dictionary we use curly braces. So how we can save data in dictionary? So this is key and this is value. Subject computer science, class 11, and this is colon in between these two values, right? So well, if we are storing object in the form of key and value, it is an example of dictionary. Such as we are storing value in tuple 66 99. Here we are storing value in a combination, right? This is one of the combination and this is one of the combination, right? So whenever we have values key and value will be the example of dictionary, right? So these are the data types which exist in Python. So these are the data types: number, string, list, tuple and dictionary. Number means all the numbers 1 2 3 4 and up to negative, positive, imaginary numbers, complex numbers, all floating point numbers, all numbers comes under numbers data type. Then all the names comes under string. And list is a collection of items. Tuple is also a collection of items, but list is mutable and tuple is non-mutable, immutable. Then comes dictionary. Dictionary stores items in the form of key and value. Now all these data types which we have covered just now, we can cover all data types in mutable and immutable types, right? So we will start mutable and immutable types. Immutable types means that can never change their values. जो अपनी values change नहीं करते हैं वो immutable data types हैं. For example, integer data type, float data type, boolean data type, स्ट्रिंग एंड टपल, ये और सारे हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप है क्योंकि इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, राइट? एक्चुअली इन पाइथन वेरिएबल नेम्स आर जस्ट रेफरेंसेस टू द ऑब्जेक्ट. मान लीजिए पी, क्यू और आर तीन हमारे पास वेरिएबल्स हैं. पी में 5 स्टोर है, राइट? पी इज इक्वल टू क्यू, क्यू में भी 5 आ चुका है अब, और आर इक्वल टू 5 है. तो अल्टीमेटली पी क्यू आर 3 वेरिएबल्स पॉइंटिंग टू सेम वैल्यू 5. हेयर पी क्यू आर referencing to same value 5. Variables are actually not storing values, right?
वैल्यूज़ हमको लग रहा है कि वेरिएबल में वैल्यूज स्टोर हैं, बट इन पाइथन वेरिएबल्स आर नॉट एक्चुअली स्टोरिंग वैल्यूज, दे आर जस्ट रेफरेंसिंग टू वैल्यूज, ये वैल्यूज को रेफरेंस कर रहे हैं। सो हेयर वेरिएबल नेम्स आर चेंजिंग, तो हम देख सकते हैं केवल वेरिएबल के नेम चेंज हो रहे हैं, वैल्यू वही है। सो इन दिस वे इट इज immutable, means value can never be changed. Now next come mutable data type। तो mutable data type हमारे पास है लिस्ट और डिक्शनरी। तो लिस्ट और डिक्शनरी में हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, दैट्स वाई दीज आर examples of mutable data type, right? So in mutable data types we can change values or those whose values can be changed, right? Examples are list and dictionary. Now I am going to discuss two functions. First is type function and second is id function. So type function is used to determine variables type in Python. Suppose we have d is equal to 30, right? D is equal to 30 we have. Now we want to know the data type of 30 or d, right? We will write command type d। तो जैसे हम टाइप डी लिखेंगे तो डी में क्या स्टोर है 30, और 30 क्या है इंटीजर है, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा इंट या इंटीजर डेटा टाइप। इसी तरह से डी में अगर हम राम स्टोर कर देते हैं तो अगर टाइप डी कमांड प्रिंट करते हैं लिखते हैं तो आउटपुट हमारा स्ट्रिंग आ जाएगा। और डी में अगर 13.7 लिखते हैं और टाइप डी कमांड अगर देते हैं तो आउटपुट हमारा फ्लोट आ जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। So this is our Python shell. Here we will write d is equal to 30, right? Now type d, so it will tell the data type of d and the answer is int or integer type. Now d is equal to 30.7, type d. Now because value is having decimal place, so it will give float, right? So here data type is float, right? Now d is equal to computer. Now type d, so the data type is str, means string data type. Next is id function. If we want to know the memory location or address of an object, right, it is possible to get using id function. So if you are writing p is equal to 5, q is equal to q, r is equal to 5, these all are variables. Now if you are writing id is equal to p, idp, idq, idr, so output of these all statement will be same because P, Q, R are pointing to same value 5. Let us do it practically. So this is our Python shell. Here we are writing P is equal to 5, Q is equal to 5 and R is equal to 5. Now see ID P. So IDP is 50 53 00 184. ID Q and IDQ is same 50 53, means this proves that P and Q pointing to same memory location, actually, right? Because P and Q is having same value 5, right? Now if we will write P is equal to 6, now
check id p, and the output is 5053, which is different from this one, right? वेरिएबल का नाम तो सेम है, वेरिएबल नाम सेम है, लोकेशन आपकी लास्ट में देखिए 184, राइट? पर अब लोकेशन क्या है, 200 है। क्यों है? क्योंकि अब वैल्यू चेंज हो गई है, यहाँ पे p इज इक्वल टू 6 हो गया, यहाँ p इज इक्वल टू 5 था। तो इससे मतलब हो ये निकला, इससे ये प्रूव हुआ कि जो वेरिएबल है वो वैल्यू को पॉइंट करता है, ठीक है? वैल्यू में, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं होती है। अगर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन सेम आता, राइट? जैसे यहाँ पे p इज इक्वल टू 5 है, तो उसका मेमोरी लोकेशन क्या है, 184, राइट, लास्ट का। और अब p इज इक्वल टू हमने 6 कर दिया, तो p की जो मेमोरी लोकेशन है, जो 6 की मेमोरी लोकेशन है, वो 200 है। अब हम दोबारा यहाँ पे q इज इक्वल टू 6 करते हैं, राइट? और यहाँ पे id q करते हैं। अब देखिए क्या है एड्रेस, 200, राइट? सो इट प्रूव्स दैट p एंड q आर वेरिएबल्स विच आर रिफरिंग टू द वैल्यू, कि वैल्यू को रिफर कर रहे हैं, राइट? दे आर पॉइंटिंग टू वैल्यू, दे आर नॉट स्टोरिंग वैल्यू, बट दे आर पॉइंटिंग टू वैल्यू. So these two functions are very important if you want to know the memory location, or if you want to know the data type of a particular variable or value. So this is enough for today. Thank you very much.